Hello dear students, very good morning. In our today's session, we'll start with a new chapter, that is chapter number 4 in your NCERT, that is motion in plane. Okay. In motion in plane, we'll be seeing initially the basic concepts of vector. We'll be seeing the basic concept of vectors. काफी बड़ा concept है ये. Okay, so many segments are there in it. चलिए, first of all let's discuss what is the need of studying vector. Okay, usually आप जब one dimension बड़ा करते थे, okay, the motion is true or fro. Okay, यहाँ यदि motion forward direction में होता है और backward direction में, that is only 1D. But in 2 dimension the object has x-axis, y-axis. ओके, मिनिमम 2 एक्सिस तो होता ही है. जब ऑब्जेक्ट 2 एक्सिस में डिफाइन किया जाता है तो इट हैज मोशन, दैट इज इट हैज सम वेलोसिटी इट इज हैविंग 2 डिफरेंट डायरेक्शन. दैट मीन्स द मोशन इज इन प्लेन. द मोशन इज इन प्लेन. इट हैज एक्स कोऑर्डिनेट ऑल्सो एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑल्सो. ओके, सो वी नीड टू डिफाइन द वेक्टर्स फॉर इट. ओके, वी हैव टू डिफाइन द स्पेसिफिक वेक्टर्स फॉर इट. फाइन. सबसे पहले वेरी इजी थिंग हम देखें, व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज. हम स्टार्टिंग में भी ऑलरेडी देख चुके हैं स्केलर क्वांटिटीज. इन डिफरेंस फॉर्म ओनली आई विल राइट वेक्टर क्वांटिटीज. फाइन. स्केलर क्वांटिटीज हमें अच्छे से पता है, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड, while vector quantities they have magnitude and direction both. Okay, they have only magnitude while the vector quantities they have both magnitude and direction. ओके, अभी दूसरी पॉइंट खास समझिएगा. एग्जाम्पल्स तो हम स्पेसिफाई करेंगे कुछ देर के बाद. दे विल चेंज, स्केलर क्वांटिटी विल चेंज इफ द मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग. जबकि यहां पे दे विल चेंज आइदर ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और बोथ दे विल चेंज. समझिएगा, दे चेंज, दैट मीन्स स्केलर क्वांटिटी विल चेंज. कब चेंज होती है? दे चेंज इफ देयर मैग्नीट्यूड चेंजेस. मैग्नीट्यूड चेंजेस. जबकि वेक्टर्स में दे विल चेंज, दे चेंज if either of the two, if either कौन सी, magnitude, direction or both changes, either magnitude, direction or both can change. It's a first session of vectors. इनिशियली थोड़ा थियोरेटिकल रहेगा. ओके, बाकी रेस्ट चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग. चलिए आगे देखते हैं. दे कैन बी, दिस स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, ओके, अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल लॉज ऑफ अलजेब्रा, while the vector quantities they are added by using a special laws of vector addition. चलिए I'll write down the point also. They can be added by normal laws of vector algebra, by laws of normal laws of algebra, by the laws of normal algebra, while over here they can be added
they can be added only by using special laws of वेक्टर एडिशन. बच्चे ध्यान दीजिएगा, वेक्टर एडिशन. ओके. Fourth, let me give you an example. For example, mass, distance, time, work, etc. etc. ओके. यहां पे स्पीड भी आएगा, लिख लीजिए स्पीड. एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फिर आएगा फोर्स. ओके. अभी कुछ और क्वांटिटीज डिफाइन करता हूं, खास समझिएगा. जो दूसरी क्वांटिटीज हैं, एक्सेलरेशन, ओके, एक्सेट्रा. ये हमने देखा बेसिक सिंपल डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. चलिए अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. हाउ विल यू रिप्रेजेंट द वेक्टर? ओके. एंड नोटेशन ऑफ द वेक्टर्स. Representation of vector. Vector is given by this symbol. Okay. This side is called tail of the vector, while this side is called head of the vector. Okay. Start with certain origin, represents a magnitude and direction both. बच्चों बहुत सिंपल है, याद रखिएगा. ये साइड हेड साइड है, ओके, और ये है टेल. वी कैन सिंपली से दिस है, ये है मूछ. मूछ कहाँ होती है? हेड पे ही होती है. और ये है पूछ. ओके. ये है मूछ, ये है पूछ. डन. अभी सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो, यदि मुझे सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन, तो सुनिएगा कैसे करते हैं. इट्स बाय डार्कन लेटर, वेरी डार्कन लेटर, और सिंपल ए ओवर इट. यूजुअली यही यूज करेंगे. ओके. हम ये यूज करेंगे, वेक्टर ए. अभी एक और बात सुनिए, सम मोर बेसिक्स. ओके. दैट इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स. कौन सी पॉसिबल डायरेक्शंस है, विच आर द रिप्रेजेंटेशन में. ये पहले डायरेक्शन देख लेते हैं, फिर रिप्रेजेंटेशन विथ विल बी सीइंग द एग्जांपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन. देखिएगा, मुझे वेक्टर रिप्रेजेंट करना है. ओके. डायरेक्शन एंड यहां पे मैं देखता हूं आपको एक्सेस. डायरेक्शन में हम सिंबल यूज करेंगे यूनिट वेक्टर्स. ये यूनिट वेक्टर्स है. यूनिट वेक्टर्स क्या है? यूनिट वेक्टर्स हम आगे डेफिनेशन में देखेंगे. आई जे के, these are the notation used for the specification of direction. I, this is pronounced as I caret, J caret. आप देख सकते हैं इसके ऊपर कैप लगा हुआ है. J caret, K caret. They are representing the axis, x axis, y axis and z axis. Okay. अभी रिप्रेजेंटेशन एग्जाम्पल के साथ देखिए. First example. Over here I have y-axis and x-axis. देखिएगा अभी. I have a vector, okay, which is lying on x-axis. Which is lying on x-axis. Here is my a caret.
I can write this as, and it has a value of 5. It has a value 5. I'll write as vector A is equal to 5i, because it is lying on x-axis. I symbol represents this vector is on x-axis. I symbol क्या दिखाएगा? This vector is on x-axis. चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे. y x, let this be my vector b. Okay, this has a value of 4. I represent it as vector b is equal to 4j. It's 4j. Okay, j किस लिए? It's on y axis. Okay, yes. Our third example is, देखिए, is my y axis and x axis. Okay, I'll draw in vector c in this case. Okay, this is my vector c. Let, for example, our x component is 3, and for example my y component is 4, and this vector c is showing the position of a particle at 3, 4. ध्यान दीजिएगा, my x component is 3, okay, and y component is 4. So how will I represent this vector? Just see, my vector c is equal to, it has x component 3, so 3i caret plus 4j caret. Okay, this is the vector representation. Fine. चलिए अभी हम देखते हैं कि different types of vector देख लेते हैं. चलिए, very simple काफी definitions है, so many different types of vector देखेंगे. चलिए, types of vector. चलिए, first is equal vectors. Okay, equal vectors. Equal vectors means two vectors having equal value. ध्यान दीजिएगा, two values having equal value and they are in the same direction. Let me give you an example and explain. Has a vector A. That means magnitude of both the vectors are same and they both are in the same direction also. Okay, magnitude of both the vectors are same and they both are in same direction. These two vectors are called equal vectors. I'll write down the definition here. Two vectors A and B have equal magnitude, and same direction, so they are called equal vectors. Okay, I can write over here vector A is equal to vector B. Okay, now I write down another next type of vector, that is parallel vector. Parallel vectors. Then दीजिएगा, in parallel vectors both the vectors should be in the same direction. Both the vectors should be in the same direction, but the magnitudes may change. Vector A and vector B. Okay. Then दीजिएगा, vector A is parallel to vector B. बच्चों ये symbol है parallel का, इसका symbol है parallel का. Okay, vector A is parallel to vector B. That means both the vector should be in same direction. Both the vectors are in same direction. Okay, and magnitudes may change. Okay, magnitude of
both the vectors may change. Magnitude of both the vectors may be equal or may be different. May be equal or different. But one condition is there, they should be in a same direction. बच्चों एक ध्यान दीजिए, these vectors are also parallel vectors. These vectors can also be parallel vectors. Fine. चलिए, next is anti-parallel vector. Anti-parallel, just direction reverse कर देंगे. Okay. पेज नंबर 4. काफी हैं, काफी सारे टाइप के वेक्टर्स हैं, देखते जाइए. नेक्स्ट इज एंटी पैरेलल वेक्टर्स. दैट मीन्स two vectors, they both are not parallel to each other. Here is my vector A, okay, and its reverse of it, just reverse of it is vector B. You can see they both are in opposite direction. Okay, both have opposite direction. Here vector A and B are said to be anti-parallel as they both are in opposite direction. Okay, they both are in opposite direction. Okay बच्चों, चलिए, फाइन. नेक्स्ट इज अ कोलिनियर वेक्टर. ध्यान दीजिएगा, कोलिनियर वेक्टर याद आ रहा है आपको टर्म? ये टर्म आपको ऑलरेडी आ चुका है बचपन में. व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड कोलिनियर? व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड कोलिनियर? नेक्स्ट इज, सोचिए, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड कोलिनियर? वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड कोलिनियर. सोचिए क्या होता है वर्ड कोलिनियर. तो हम कोलिनियर वेक्टर्स भी देखते हैं. आई होप कि अपने कमेंट बॉक्स में लिखा होगा व्हाट डू मीन बाय वर्ड कोलिनियर. लिखिए कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज करके. यस, आई होप कि काफी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा होगा. आई राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर यू ओवर हियर. कोलिनियर वेक्टर मीन्स कोलिनियर वेक्टर्स are those collinear vector are those vector which act along the same line, which acts along the same line. ध्यान दीजिएगा, वर्ड acts along the same line. So the angle between them can be 0 or 180. So the angle between them can be 0 or 180. A main condition is act along the same line. Okay, देखिए, I'll draw down the figures for you. Okay, let me explain you with an example. Here is my vector A, okay, and vector B. Fine, they both are parallel vectors. ऐसे भी हो सकता है, vector A, okay, and vector B simultaneously, and they can be in anti-parallel also. Opposite है. Yes, इसमें एक और केस भी आ सकता है. Fine, parallel, yes, they are parallel. Okay, they both are anti-parallel. Vector A, vector B, vector A,
vector B. Okay. In this case, theta between them is 0. Okay, you can just see वेक्टर्स जो होते हैं एक्चुअली दे आर फ्री वेक्टर्स. अभी आपको डेफिनेशन आएगी. वेक्टर बी एंड वेक्टर ए ओके हैं ऑपोजिट टू ईच अदर. वेक्टर ए एंड बी यू कैन इजीली सी ओवर हियर एंगल बिटवीन देम थीटा इज 180. ओके, यदि यही फिगर सेम फिगर बी यहां पे आएगा, ए यहां पे आएगा, देखिएगा इसको भी रीड्रॉ कर रहा हूं फिर से. इसमें बी ड्रॉ किया, ए ड्रॉ किया. एंगल कितना आ रहा है बच्चों बोलिए? यस इट्स 180. थीटा इज 180. ओके, दे आर एंटी पैरेलल while they are parallel. Okay, theta between them is 0. Angle between these both are 0. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर. ये देखा हमने कोलिनियर वेक्टर, दैट मींस दे एक्ट ऑन सेम लाइन. चलिए देखते हैं फिफ्थ. Our next title is coplanar vector. Coplanar vector, that means the vectors which, ध्यान दीजिएगा, coplanar means same plane. The vectors which act in the same plane are called coplanar vectors. Okay, I write down the definition for you. The vectors which act in the same plane are called coplanar vector. Okay, this is a plane actually. Okay, but I'll draw down the plane for you. For example, this is my plane. Okay, let me take two vectors. Both the vectors may be parallel, anti-parallel. Okay, किसी भी तरह के हो सकते हैं, A, B, but the condition is they both the vectors are in same plane. Okay, both the vectors are in same plane. चलिए next is को-इनिशियल वेक्टर. आप देख सकते हैं आपके एनसीईआरटी में इतने टाइप ऑफ वेक्टर्स नहीं दिए गए हैं. ओके, को-इनिशियल वेक्टर, सोचिए क्या होगा, सोचिए सोचिए सोचिए. बहुत ही सिंपल है. द वर्ड इटसेल्फ सिग्निफाइज. आई विल ड्रॉ डाउन द फिगर फॉर यू फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. The vectors which start from same initial point are called co-initial vectors. Vectors which have same initial point. Okay. I hope you're able to see. The vectors which have the same initial point are called co-initial vectors. As shown in the figure, vector A, B, C are co-initial vectors. Okay. These are co-initial vectors. The vectors, I write down the definition over here. The vectors which have the same initial point are called co-initial vectors. Okay, in figure A, B, C are here. A, B, C are co-initial vector. Here vector A, B, C are co-initial vectors. Okay, चलिए देखते हैं नेक्स्ट.
नेक्स्ट इज कोटर्मिनस वेक्टर. ध्यान दीजिएगा, ये न्यू टर्म है, कोटर्मिनस वेक्टर. ओके, I'll draw down the figure for you, then we'll write down the definition for it. Okay, figure देखिए. There are three vectors with us. Okay, let it be vector A, B and C. Okay, three vectors are there in front of you. The point of application is common. The point at which all the vectors are acting the force, all the vectors are pointing at the same point. That means I'll define this as the vectors which have common terminal point. The vectors which have the common terminal point. Common terminal point are called coterminous vector. Coterminous, it's terminus, huh? Coterminus vector. Okay, so now as shown in the figure, A, B, C are coterminous vectors. I can write here in figure vector A, B, C are coterminous vector. Okay, चलिए बच्चों देख लेते हैं कुछ और टाइप ऑफ वेक्टर्स. काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं. जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग. को इनिशियल, सेम इनिशियल पॉइंट. को टर्मिनस, same point of application. This is the only difference between these two definitions. Okay, चलिए. Next is eighth, that is negative vector. Negative vector. Okay, बहुत simple, बहुत ही simple से definition है. Okay, I'll draw down the figure. Here is my vector A. Okay, अभी इसी वेक्टर ए को उल्टा कर दीजिए. इसी वेक्टर ए को उल्टा कर दीजिए. ओके, आई नेम इनिशियली एज अ डिफरेंट वेक्टर बी. बट व्हाट इज बी? इट इज जस्ट नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ए. सो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर is defined as another vector having same magnitude but having opposite direction. Okay, let me write down the simple definition for you. So the negative of vector is defined as another vector, okay, but having same magnitude. It is having same magnitude but having opposite direction. Okay, opposite direction. Okay, yes all of you. Chaliye, now next is definition number 9. That is very important definition for you. That is called modulus of the vector. ध्यान दीजिएगा. Modulus of vector. Okay, देखिएगा, खास ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये. ओके, आगे चैप्टर में काफी सारी जगह ये यूज होने वाला है.
The modulus of vector, the modulus of vector means the length, of vector, okay, or the magnitude, of vector. Let's understand it with a certain example. Okay, बच्चों हमने एक एग्जांपल में लिया था वेक्टर सी, दैट वाज 3i प्लस 4j. ओके, यदि मुझे जब ये वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड दैट इज मॉड्यूलस फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? चलिए मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कैसे होगा? दैट इज मॉड्यूलस, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर सी स्क्वायरिंग एंड रूटिंग, एक ही बात रखिएगा, स्क्वायरिंग एंड रूटिंग, स्क्वायरिंग ऑफ ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट, that is 3 square plus 4 square. Okay, so here my 3 square plus 4 square is 9 plus 16, that is under root of 25. So the under root of 25 is 5. Okay, and one more thing I'll mention, the modulus of vector is always a scalar quantity. It is a scalar quantity. It is a स्केलर क्वांटिटी. ओके, चलिए बच्चों, लेक्चर ऑलरेडी 30 प्लस मिनट हो चुका है. कुछ और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी बाकी है अभी बच्चों. चलिए दिल थाम के बैठिए. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी पेज नंबर 7, डेफिनेशन नंबर 10. चलिए देखिए, our next definition is polar vector. बच्चों काफी definitions still are remaining. There is polar vector, axial vectors, fixed vector, free vector, zero vector, unit vector. Unit vector is very important definition. Okay, I think I have to make the two parts of this video. Okay, from definition 10 we'll see continue in our next session. Okay, so आज जो आपको 9 definitions कराई गई है, prepare well for the definitions. Okay, write it in your fair notes. I hope कि जो मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था, कल सम जो दिया था, आपने कर लिया होगा अच्छे से. ओके, और अच्छे से आप प्रिपेयर करिएगा. नेक्स्ट अपकमिंग डेज में, नेक्स्ट वीक में आपकी बोर्ड के जो एग्जाम है, एक कम कसौटी जो बोर्ड के द्वारा ली जाती है, प्रिपेयर वेल फॉर इट. ओके, नेक्स्ट सेशन में आई विल बी गिविंग यू सम टिप्स how to prepare for the chapter number 3. Already you have given the test of chapter number 3. You have to prepare the MCQs from assignment, illustrations, and simultaneously you have to prepare the numericals which are covered. I'll give you the theory questions of theoretical questions that you have to prepare in next upcoming session. Theory भी काफी prepare करनी पड़ेगी. कौन सी theory prepare करनी है आपको chapter number 3 में से? I'll give you the list of it. Okay, today prepare well with the definitions, and next session we'll continue with the other definitions. Fine. Thank you all of you. Have a very nice day ahead.